All right, beautiful children. How are my children doing? I am back. I'm meeting you live today. Yeah, for this amazing session, my children. Ecology का chapter चल रहा है Organism and Population and today is the 6th class. आज ना इस chapter का second aspect हम शुरू करने वाले हैं, which is very, very important when we understand ecology in real sense. Yeah, the real-time understanding of ecology, my children, starts when we move from one single organism to population. That is the reality. Because I always tell you, no organism is living in isolation. वो तो एक भ्रम है कि हम अकेले कहीं पे बैठे हैं और अकेले जी रहे हैं. We are always interacting. Now this is the mantra of ecology and we are going to say it in every session कि we are constantly interacting with other organisms, different species as well as our physical environment. Yeah, the unspoken association is our association with the environment. Let me welcome you all. Vishal Kumar, good evening. I saw your good evening. Thank you very much. Ritu Tiwari, good evening. Juhi, namaste beta. Thank you for all the hearts, all the love. Spread the love, children. Share the session, like the session. And if you're new here, please subscribe to the channel because Aakash BYJU'S NEET is going to change your life forever. As you travel, as you cover this journey of your NEET preparation. Himanshu Dhaya, Rituja, hello, Bhavesh Kumar, good evening, beta. So people, moving further, please, since you are such amazing aspirants of NEET exam, you guys have taken this decision to be a part of Aakash BYJU'S NEET, and that shows, that speaks volumes about your aim and your dream of becoming the future doctor, the successful doctor, and making sure कि यार अगर ठान ली है तो हो ही जाए सिलेक्शन. तो इसीलिए एक और स्टेप, आप हमसे तो रोज जुड़ते ही हैं, टीचर्स से तो रोज जुड़ते ही हैं. One more step that you need to take is download this magical app, Aakash BYJU'S app, and the beautiful part is you can explore it free of cost for 14 days. Yeah, open the Pandora box and explore all the features. You have video libraries, you have every concept, whether it's physics, chemistry, biology. I'm not just saying biology, explained with the help of world-class animations like never before, like nowhere else. It is right here, है ना. तो अब ये जो बड़ी कड़ी मेहनत, सालों साल की मेहनत से we have created this magic and now it's there for you. Yeah, so go for it and share your experience with me and spread the experience, spread the love. Ishu Kumar, beta, thank you for asking. I'm absolutely fine, बच्चे. मुझे क्या होगा जब तक आप लोग हो, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है. टीचर्स तो भले चंगे रहेंगे ही रहेंगे. And we need more and more such support and love. Yes, Roy Manson, good evening. बेटा आप एक बार भी लिखते हो कमेंट, मैं पढ़ लेती हूँ. हाँ, only when I'm not teaching, when I'm not engrossed in explaining you the concepts, तब शायद कोई comment miss हो सकता है. Good evening, Srishti Singh. Now people, like the session because you love Aakash BYJU'S NEET and share the session because if you do good, good comes back to you. Can we lower that voice? Yeah. And if you have any concerns, मेरे से कोई भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है सब्जेक्ट रिलेटेड, या आपको कोई जनरल प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, any discussion regarding your NEET preparation, please make the best use of the comment section that you have to interact with ma'am. And I look at all the messages, I tell you. Okay, Neeraj Singh. Now people, in the beginning we have spoken about the levels or the ecological hierarchy. Yes, तो आपने living world में भी taxonomic hierarchy पढ़ी थी. Yeah, hierarchy is nothing but telling us the steps in which we understand the science, in which we understand the subject. तो सबसे पहले organism था. अभी तक की classes में, we are good with the chat. अभी तक की classes में हमने, we can go off with the chat. Yeah. अभी तक की classes में हमने ये देखा कि what exactly is the existence of an organism. एक organism कैसे रहता है? If we are saying that there's a reciprocal relationship with other organisms and the physical environment, we specifically spoke about the abiotic factors which are prevalent at any given point of time. कि भाई हवा, पानी, ये जो elements हैं, हवा, पानी हमारे space में
कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, एंड हाउ डू वी रिस्पॉन्ड. इज इट ऑलवेज अ प्लेन रिस्पॉन्स? नो. हमने लास्ट क्लास में रिस्पॉन्सेज में काफी अच्छे से पढ़ा था. व्हेन वी स्पोक अबाउट रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, वी स्पोक अबाउट रेगुलेशन, वी स्पोक अबाउट कन्फर्मेशन, एंड वी स्पोक अबाउट पार्शियल रेगुलेशन. या we can take off the chat. Manas, if you have any question, put the question in the main comment section. I'll look at your doubt. अब आज हम बात करते हैं पॉपुलेशन की. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ पॉपुलेशन इज. पॉपुलेशन क्या होता है? तो बच्चों, पॉपुलेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इट इज व्हेन द same species, when the individuals of the same species come together. It's not, that's why you say population of human beings, you say population of plants, you say population of fishes. So it has to be the species, the individuals of the same species. सबसे important बात है same species in a given geographical area at a given point of time. जब भी आप analyze कर रहे हो environment को. Cool. Now there is something called as, ये आप evolution में पढ़ोगे लेकिन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. There is something called as reproductive isolation, which is very very important when we explore the idea of population. Okay, so it is the next step in the ecological hierarchy. कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हम at least एक जैसे लोग तो साथ में रहते ही हैं ना. So that kind of interaction is very close. When I say close, we'll see what I actually mean by a very close interaction when it comes to population. उससे पहले reproductive isolation क्या है? These are the 2-3 major keywords when I speak about population, defining the population. तो सबसे पहले you mark the geographical area. मैम, ये geographical area पे इतनी importance आप क्यों दे रहे हैं? Well, क्योंकि जिस area में आप population को study कर रहे हैं, भाई उस एरिया का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो वहां का टेम्परेचर है, रेनफॉल है, पानी है, जैसी भी हवा है, उससे ये पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रही है, अडेप्ट कर रही है. राइट? देन क्योंकि व्हाट आई मेंट बाय वेरी क्लोज रिलेशनशिप इज कि क्योंकि रिसोर्सेज और हैबिट्स की यूटिलाइजेशन सेम है. हम लोगों को एक जैसी चीजें पसंद होती हैं, हम लोगों को एक जैसा खाना पसंद होता है. राइट? सो वी आर कॉन्स्टेंटली नॉट ओनली शेयरिंग द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज इकोलॉजिकली क्या बोला जाता है? नॉट द पिज्जा दैट यू ऑर्डर. आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज मीन्स फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर. इकोलॉजी में जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाता है, द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज इज स्पोकन अबाउट. एंड what is the best way to survive? The best utilization of food, resources, and to continue the species, and that is by mating or reproduction. Right? तो उसी से ही तीसरा पॉइंट निकल के आता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सिर्फ और सिर्फ सेम पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग होती है. कहने का मतलब ये है, द इंटेलिजेंस बिहाइंड इट इज कि टू कीप द यूनिफॉर्मिटी एंड टू कीप द ऑर्डर, ऐसा है रूल कि individuals of the same population will reproduce amongst themselves and the species continues. इसको बोलते हैं interbreeding. Okay, interbreed with one another. So that is a feature you see at the level of population only. आई बात समझ में? तो हम शेयरिंग भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर प्रेजेंट समवेयर और लड़ाई नहीं होगी. अब इकोलॉजिकली इस लड़ाई को हम कंपटीशन बोलते हैं. इट्स नॉट बैड एट ऑल. You guys are preparing for a competition. अगर competition नहीं होगा, how will we find the superior species? We need to find the superior species. We need to give particular roles to a species. और वो roles कि भाई ठीक है, this person is suitable to become a doctor, this person is suitable for something else, to become an astronomer, to become an engineer, whatever. Now that helps with the use of competition. Now people, a very important point, your NCERT says this quite nicely. So usually when we say interbreeding, we think about sexual reproduction. But अगर कोई population asexual reproduction से बनी है, for example bacterial culture in a lab, or
an algae which has divided like anything. तो lower organisms में तो asexual reproduction से ही population बनती है. So at the population level, we do consider asexual reproduction. Okay, so that is also applicable. Asexual reproduction, for example, bacterial culture in a petri dish. Now people, in the last session we spoke about, मैंने आपको adaptation के बारे में बताया था कि it is not only change in the structure. हमने examples भी पढ़े थे कि adaptation simply means how I modify either number one, my structure which is morphology, how my body functions physiology, or how I behave. These are the three basic methods of coming in tune or survive. Yeah, the very important aspect of ecology is survival. So how do I survive? These are the three methods to deal with the physical environment, and that increases its fitness. आज के बाद मैं ये पहले भी explain कर चुकी हूँ. Whenever this term comes, this is not explained in textbooks. Okay, but what is ecological fitness of a species? इसको जान लीजिए. Fitness simply means how good are my adaptations. Am I able to stay happy? Okay, just to explain you. Happy ecologically doesn't mean haha I'm smiling. No. But think like this. Am I able to stay happy in any given situation? Irrespective. Okay, I'll have to work hard for it. Situation change hogi, I'll have to change. But ultimately, am I able to adapt? That is fitness. Okay, so fitness means how superior my adaptations are. Are they helping me to survive irrespective? And the second one is reproductive potential. Am I able to continue my species? Human beings का तो काफी अच्छा हो गया reproductive potential. Now adaptations evolve over a long period of time. We study population ecology to understand. Very very important. When we study ecology at population level, we understand कि यार इस population में ना ये बड़ी मस्त adaptation हुई और इसीलिए जो डार्विन अंकल बोलते रहे कि भाई कुछ कर लो तुम, कितने हीरो बन लो, कितने जीरो बन लो. Natural selection, the nature will select superior adaptations and that species will continue to evolve. And that is called, that leads to evolution. I just use the word evolve. So, you know how it happens? Adaptations, जिसने superiorly adapt किया, जो हर स्थिति में centered रहा, खुश रहा, natural selection, that is a natural law he has explained. Nature उसको select करेगी. कि भाई नीट की तैयारी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, रास्ता इजी नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. यू माइट वांट टू ओपन फेसबुक एंड स्पेंड 2 hours on that. You might want to open whatever apps you use here, Instagram, and take pictures and do that forever and compromise on your preparation. Now that is a distraction because that is given to you. You are exposed to that. लेकिन जो कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस के बाद ये जान लेगा what is permanent and what is impermanent, that person will be selected by the nature or the competitive exam, and then evolution happens. Ultimately जब populations में ये process चलता रहता है suitable adaptation और natural selection का, धीरे धीरे different populations इस planet पर evolve होती रहती है. We'll continue to get successful doctors. As simple as that. So there comes the importance of population ecology, जिससे conceptual question आता है और NCERT में उसने बस दे दिया है किसी तरह, है ना, सुनाई दे या ना दे बस बोल दिया है. So उसको सुनाने के लिए ma'am comes and meets you. So population genetics simply means what kind of suitable variations. जैसे आप evolution में जिराफ का example बचपन से पढ़ते आए हो. Only those giraffe species survived who inculcated, who let those adaptive features or variations come into the population, like long legs and long neck to reach the trees. Aya, the other species did not survive. You with me? So when you study ecology, when you study a population, it is connecting you to these aspects. It is connecting ecology to genetics. And finally, evolution. So connecting ecology to evolution and genetics, because they're actually not separate. You have to connect them. All right, now people,
When you understand an organism and its existence, whether it's a mosquito or a human being or any plant, any organism, एक बात निश्चित है कि इस जिंदगी में अगर जन्म हुआ है तो मरना है. There is birth and death, right? But when we study ecology at a population level, then these are not the factors. कौन मरा, कौन आया. What are the factors that are studied, that are considered when you study population? Okay, so there comes the story of population attributes. Very very important. अब मैं तुम्हें बता दूं, ये वो बॉक्स है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. The examiner is not going to leave the topic of population. एक बार के लिए अगर वो organism ecology छोड़ भी दे, population attributes and population interactions not happening. I've been saying this since years. There is no paper, medical entrance exam, since it is happening, since the inception, जिसमें population attributes and population interaction, क्योंकि यार it is related to the समझ. सब्जेक्ट समझा ही नहीं अगर तुमने ये नहीं समझा कि हम कैसे कैसे रिश्ते बनाते हैं at the ecological level. Are all interactions going to be good? Are all friendships are going to be good? Are you supposed to like every species? No. But are the negative interactions actually detrimental? No. They are much needed for the balance. Yeah? So anywho, we are going to start with population attributes. What can you see on the screen? आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है कि यार ये ना पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस, कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं. घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है. This is happening. Now what actually is happening is related to the attributes. कोई भी population कभी भी एक constant state में नहीं रहती. It increases, it decreases. It increases, it decreases. Huh? Look at what happened to human population as COVID hit us. So how do we study this, such a change that is happening, or to use these two terms together, which is beautiful, the constant change that is happening. You see how it is a conundrum? Constant change is happening. So we calculate not, हम कभी organism के आने जाने को नहीं देखते हैं. कोविड में जब डेटा आता था, रोज आता था, it used to be how many deaths happened in this area, in this particular geographical area, 24 hours में, 48 hours में. So what are the population attributes? The very first one is the birth rate. You're not saying births, you're saying rate. You see, so a factor of time has come in. वक्त की पाबंदी आ चुकी है when we speak about attributes of the population. भाई स्टोरी वही है, जीना और मरना लगा हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन के वक्त ऐसा क्या हो रहा है इस पॉपुलेशन में कि बर्थ रेट बहुत इंक्रीज हो गया, लोग बहुत खुश हैं. ऐसा क्या हो रहा है इस पॉपुलेशन में कि एकदम से डेथ रेट इंक्रीज हो गया. सो दैट टेल्स एन इकोलॉजिस्ट कि भाई क्या चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. इज देयर अ सूटेबल वेरिएशन और देयर इज नो इवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग. So then it tells us कि यार nature किस population को select करेगी. That way. Okay. So to explain birth rate, I'm going to give you an example which is given in your NCERT. एक थी pond में आया lotus, very good, very beautiful. भाई पहले साल 20 lotus flowers थे. We were very happy. Year 2 में जब मैंने, क्योंकि देखो time strapping is here. Rate बोले तो you are strapped by the factor of time. Alright, so number of lotus in the pond in the second year is 28. What does it tell you? यार मैं time की पाबंद हूँ, okay? मेरे पास एक geographical area है, that is the pond. And what can I see? It is the change. The change, but considering how many individuals were present initially. That is birth rate. So you take into account पहले कितने थे, अब कितने हुए. So what is the formula? Birth rate is number of individuals which got added, but you are also taking in account the initial population of the lotus ka fool, and it will give you the ratio. So it is the ratio of addition
and the initial, which is present, already present. So it tells you that the birth rate of this population of lotus within a span of 1 year, आया ना time का factor, in this particular pond is 0.4 offspring per lotus per year. Now I see, this means the pond has good resources. The population is in tune with the physical environment. The water has the available resources. The lotuses are coming in. आया समझ में? This is cool. Now, next thing. How do we define birth rate? ये जो definition है ना, NEET से पहले boards में ये favorite question है. This is a very important question regarding the birth rate. What is it? You saw it. See, never do this. Okay? You never. लोग क्या करते हैं? 90% of the students that I see, and that is how it is taught. Book में भी, classes में भी, definition, and then you understand. Definition रटेंगे, उसके बाद देखेंगे समझ में आएगा या नहीं आएगा. What is birth rate? No. You arrive at the definition. See how we arrived at the definition. I told you through an example. हमने example से start किया. उसके बाद हमने उस example से formula derive किया. I'll come to the chat box. Yeah, the team will bring the chat box and I'll read all your messages. Don't be impatient. Yeah, when the team puts the chat box, I'll be able to respond to the messages. Now people, like I was saying, यही पढ़ने का तरीका है. चाहे आप physics पढ़ें, चाहे आप chemistry पढ़ें, आप कोई भी कभी भी आज कल परसों जब भी पढ़ाई करें, please follow this order. If you do this, if you bring this small change in the life, thank you very much, been waiting. If you bring this tiny change in your life now, it's going to do wonders. Try it for yourself. अपन ने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया और फॉर्मूला से अपन अब डेफिनेशन इजीली शब्दों में उतार सकते हैं. सो व्हाट इज इट? आई एम गोइंग टू सी योर मैसेजेस. इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड टू अ, रटना नहीं है प्लीज, रटना नहीं है, पाप लगेगा. Number of individuals added or born in a population. Don't forget there is factor of time. In a given amount of time to the initial total population. What are your keywords, Baba? Keywords देख लो और definition हो जाएगी. First of all, it is a ratio. Yes, ma'am. Then it is the individuals added to the population. Okay? And ratio between initial and addition. New and initial. We good? Similarly, we have the death rate. What is death rate? मैंने बोला similarly. सब कुछ same है. Example से समझते हैं. So we have a nutrient medium. उस nutrient medium में मस्त dragonfly आई, ड्रोजोफिला आई. fruit fly आई, ड्रोजोफिला आई. हमने देखा कि इसमें हमने काफी अच्छा सा न्यूट्रिएंट मीडियम. यूजुअली आप ड्रोजोफिला को ग्रो करोगे, आप जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे, इट हैज टू बी शुगर रिच मीडियम. आपको ड्रोजोफिला यूजुअली फ्रूटी फ्लावर्स या फ्रूट्स के अराउंड मिलेगी, मैंगो एंड ऑल द वेरी सुक्रोज रिच मीडियम्स. तो हमने जब इसको ग्रो किया तो पहले दिन हमें, आर वी एबल टू गेट इट? पहले दिन हमें 40 फ्रूट फ्लाई मिली. कैन आई सी द मैसेज? Guys, please share the session. I can see all your hearts and all the love. Share the session with everybody. Not able to see it. This channel, or say this saying, we need to scroll for the messages. Or say this saying, this channel helped me a lot. Thank you, BYJU'S team. I totally love this. We are here to reach every kid, everywhere. जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो. आकाश बायजूस नीट इज स्टैंडिंग टॉल फॉर योर नीट प्रिपरेशन. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैम हाउ टू लर्न, वी फॉरगेट इट इन सम डेज. That's a good doubt, Radhe Shyam. That should be a doubt of any student who's embarking. चला गया. Who's embarking on this journey. बच्चे, Radhe Shyam, see, I don't have a magic wand. I have a magical pen though. बट एज ए टीचर मेरे से पूछोगे ना तो मैं कोई मंत्र बोलने के लिए नहीं कहूँगी निमोनिक्स बना लो, शॉर्टकट्स ले लो. नो, शॉर्टकट्स डोंट एग्जिस्ट इन माई वर्ल्ड ऑफ प्रिपरेशन. रिविजन, revisit,
जब पहली बार आप किसी नए एड्रेस पर जाते हो राधे श्याम, somebody tells you ये इसके घर का एड्रेस है, कितनी मुश्किल होती है ना जाने में. लेफ्ट लेना है, टी पॉइंट आएगा, राइट लेना है, यू टर्न लेना है. बट that difficulty is for the first time. You get better and better. And then finally, think about it, आप नींद में भी आपसे कोई रास्ता पूछ ले कि भाई घर का एड्रेस क्या है, कैसे जाना है, you'll be able to tell it. Why? Because you've been redoing it. That is the power of this beautiful instrument here. Redo it, revisit, revise, and it is going to do wonders. अच्छा, आप कहोगे मैम इतना काम है. Radhe Shyam has asked a doubt which is beneficial for all of you. So kindly listen. आप कहोगे मैम इतना काम है, अब मैं आपकी 1 जुलाई की क्लास रिवाइज करने बैठूं फिजिक्स केमिस्ट्री. You will realize कि as you revise again and again and again, that 1 hour class is going to take 5 minutes. Sweet 5 minutes. That is the power of revision. That is how this brain works, I tell you. If you don't believe me, try it for yourself. लेकिन share कर लेना कि ये जादू हुआ या नहीं हुआ. Now that is the magic and the solution I'm going to give you till I continue teaching on this earth. Okay, I can't see this one. Yeah. Okay, I'm trying to get all your messages. Wait for a moment. That's a nice name. क्या बोलना चाह रहे हो? Preparation कैसे करें? ऐसे ही तो करें. You're at the right place, ना बाबा? You are at the right place and meeting the right person. दीपादित्य, thank you. उसके ऊपर वाले messages दिखा दीजिए. और कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, बार बार messages लिखेंगे और disturb करेंगे क्लास में तो अच्छा नहीं लगता ऐसे. You can put your message once in the chat box and I'll see all your messages. अगर नहीं मैं जवाब दे पाती हूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए. चलिए अब हम आ जाते हैं मक्खी पर. आकाशी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम है. हेलो टू यू टू. ऑलराइट, अगर आपको जाना है तो वी कैन कीप इट ऑन. हाँ, सो डे 1 40 फ्लाइज थी. सबको समझ में आ रहा है? गुड. अब क्या हुआ, 7 दिन तक मैंने इनको ग्रो करने दिया. लेकिन भाई 7 दिन में मैंने ये रियलाइज किया कि ऑन डे 7, सी factor of time, yeah, I have only 36 flies left. गड़बड़ है ना? यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट मीडियम इनएडिक्वेट रह गया. सो डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेम ही है, डेफिनेशन भी सेम ही है, लेकिन अब मरने की बात है. सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु गॉट removed from the population. पहले हमने क्या बोला था? added to the population. Initial remains very important and you get the ratio. You get the ratio in a particular time. स्थान और समय निश्चित रहेगा. Cool. Motivation. Thank you for motivating us. Welcome to the class. So lovely to have you. Okay? You can let me know any problems, any concerns and any good things that you wish to. अब डेथ रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आज से ना हम वो नहीं करेंगे रट्टू तोते वाले काम. हाँ जी, नोट्स बनाए, डेथ, what is the death rate? It is the ratio of number of individuals. No, don't do that. You first understand the example. You derive your own formula. Let your brain work. The more, Radhe Shyam, again, since you've asked such an amazing doubt, अक्सर हम वो चीजें भूल जाते हैं जिसमें हमारा अपना श्रम नहीं होता है ना, जिसमें हमने अपनी कोई मेहनत, जिसमें हमने अपने दिमाग को नहीं खोला होता है. So make this, the more you make this work, it's going to keep growing. It's going to yield more. Otherwise ना ये सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है. Okay, so what is it? Keyword number 1, ratio of number of individuals. What is the keyword number 2? It is the removed. है ना, removed, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल सिर्फ मरे ही, और भी कॉजेज हैं रिमूवल के. भाई वो वहां से निकल के जा भी तो सकता है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे. That way. So I'm using a more generic term. Removed in a population in a given amount of time will be the very important key thing in these definitions to the initial population. Good? Are we understanding? Are we good here? We are very good. Now next is sex ratio. यार एक ecologist के लिए ना ये आप census ये आप हमेशा देखोगे.
This will always be mentioned. Huh? So sex ratio tells us about the health of a population. मैम ये हेल्थ ऑफ द, अब बुक लिख के दे देगी हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन, अपन रट लेंगे, बट हियर with ma'am we are not ratifying anything, we're going to shred it all, we're going to get to the depth of it. Now books use the term fitness of a species. I told you what it means. Now what do they mean by the, क्या बोला, health of a population? हाँ ऐसा बोला ना बुक ने कि भाई सेक्स रेशियो हेल्दी है तो पॉपुलेशन हेल्दी है. व्हाट इज हेल्थ? Sex ratio, when we talk about the health, it simply means whether this population will be able to propagate the species. अगर मैं इसमें मेनली हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, नहीं, बट क्लासिक एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स. सो अगर ये रेशियो अच्छी है, हेल्दी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा? पीपल विल इजिली गेट मैरिड and the population will continue to increase or at least get maintained. हम दो, हमारे दो types. लेकिन अगर ऐसा हो गया, जो हुआ है, हो रहा है, because of female feticide, our country has this largest problem of killing female fetuses, especially in the post independent era. 1947 के बाद ये बड़ा प्रचलन था कि जो फीमेल fetus होता था, फीमेल चाइल्ड होता था, इवन आफ्टर बर्थ दे वर किल्ड. तो एक टाइम ऐसा आया था, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है. केरला हैज बीन रैंकिंग आई थिंक द नंबर 1 इन दैट. सो व्हेन मोर मेल्स आर देयर लेस फीमेल्स आर देयर, और मोर फीमेल्स आर देयर लेस मेल्स आर देयर, शादी कैसे होगी? व्हाट विल बी द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन? सो हियर हेल्थ मीन्स कि ठीक है भाई सर्वाइव कर लिया, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द फ्यूचर? You with me? So remember this. ये भी सवाल बोर्ड्स में और नीट में तो भाई ये भर भर के आ रहा है. I don't know why. इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हो भाई? So you have to make sure कि कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें. Try to be on time. अब मुझे तो एग्जाम्पल से समझाना सबसे अच्छा लगता है, because it will register directly in our heads. भाई दो देश थे X and Y. Okay? अब इसकी सेक्स रेशियो देखते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने कंट्री एक्स में देखा, ध्यान से देखिएगा, ऑन स्क्रीन, नॉट ऑन मी. ओके, यू कैन लुक एट द स्क्रीन. नाउ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, इन पिंक वी हैव द फीमेल्स, इन ब्लू वी हैव द मेल्स. ओके, सो फीमेल्स आर 300 एंड मेल्स आर 700. गड़बड़ है ना? गड़बड़ है ना? बाकी 400 क्या करेंगे? उसके बाद कंट्री वाई, इट्स समथिंग सूटेबल. Total number of females are 220 and total number of males are 250. So how do you calculate number of males and number of females का ratio into 100? तो अपने को क्या मिला? X में number of males are much more than the females. जो ratio मिली, sex ratio मिली, around 230 मिली. This simply means that 230 males per 100 females. लेकिन country Y में we have 114 males per 100 females. So this becomes a healthy sex ratio. So now this population के हिसाब से समझो भाई, हाँ सेंटिमेंट नहीं डालना है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. तो अगर मैं देखूं तो यहां के लोग, कंट्री वाई के लोग कैन प्रोपगेट द पॉपुलेशन. सुखी संपन्न जीवन रहेगा. आया समझ में? लक्ष्मी new to the class, so many new people to the class. Okay, next if you have any doubt let me know. ये जो एज पिरामिड है ना, this topic of age pyramid, आज कहीं लिख के रख ले, अपने शीशे पर, अपने दीवार पर, अपनी फ्रिज पर, जहां भी ज्यादा वक्त बार बार जाते हो. See, it is the factor of बार बार. If you ask me today, NEET selection पक्की कैसी करनी है, I'm going to give you one keywords. I love keywords. Less words, more effect, action. All that matters is what you do, not what you say. Okay? So the word is bar bar, again and again, again and again. So age pyramid has to be a question. It is sure, short.
You have to understand, if you've been associated with me since some time, there are certain concepts I'll say, हाँ ये examiner को बहुत पसंद है, ये मेरा भी favorite है, ये बहुत important है बेटा, ये लिख लेना. No, it's different here. It is happening. It is going to be asked. Yeah? So let's do that. आज की क्लास का सबसे जो important point है, that is age pyramid. Okay, the star concept of this class. Now people, यार होता क्या है इकोलॉजिकली, बार बार मैं टर्म यूज कर रही हूँ इकोलॉजिकली. जब मैं ये टर्म यूज करती हूँ ना इकोलॉजिकली, तो वो मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने से निकाल कर, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, दैट इज नॉट इकोलॉजी. दिस इज द साइंस ऑफ बियॉन्ड यू. दिस इज द साइंस ऑफ एवरीथिंग एल्स. टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो इकोलॉजिकली बोले तो इस संसार में एट अ वेरी लार्ज स्केल, whatever geographical area you choose, there are 3 age groups. Young people, middle-aged people, old people. समझ आता है मैम? बिल्कुल आया समझ. Ecological terms, sophisticated terms, pre-reproductive, reproductive, the married group, okay, and old people, dada dadi, right? So pre-reproductive, not married, children like you, busy making your future, okay? Then comes the reproductive age, married people, then old people. So this is the age group. Makes sense to us? This is the age group. So in a population, their comparative, I'm writing a very important word here, comparative abundance. There you go. Speaks volumes. भाई सबको दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? IIT lovers is Aditya. Beta, share the session. Share the session with NEET. This one, JEE aspirants also. Everybody should study ecology. It is a holistic, it's a wholesome science. मैं सबको पढ़ाऊंगी बाहर जाके अभी. पूरी आकाश बायजूस टीम पढ़ेगी. My hand just got out of the okay. This amazing channel needs more attention. Yeah, so you guys are the flag bearers, aren't you? हाँ? देखो, अगर तुम बोलोगे ना मैम take my name, हाँ, and all these things, तो इसका उल्टा होने वाला है. यहाँ पे चीजें डिफरेंट होती हैं. आई एम गोइंग टू टेक नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू डू बिग थिंग्स हियर, हु आर गोइंग टू स्टडी, और मुझे ना एक शब्द से पता लग जाता है कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. सो राधे श्याम, दैट्स द डील. आप रेगुलर रहोगे क्लास में तो हर क्लास में आपका नाम लिया जाएगा, और आप पढ़ाई करोगे तो सेशन में बार बार आपका नाम लिया जाएगा. बट इस तरह से नथिंग इज हैपनिंग. ओके, चलो बातें बहुत करते हो. कंपैरेटिव एबंडेंस. यार कंपैरेटिव बोले तो अगेन आई एम सॉर्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ रिलेटिव एस्पेक्ट्स. एबंडेंस, कौन कितना है, किसकी कितनी परसेंटेज है, दैट टेल्स यू about the status of a population. What did I say? Status of a population. मैम क्या यार, आपने तो कहा था हर वर्ड को हम चीड़ फाड़ कर पढ़ लेंगे. अब ये स्टेटस क्या है? पहले फिटनेस था, अब हेल्थ था, अब स्टेटस है. एज एन इकोलॉजिस्ट, थिंक लाइक एन इकोलॉजिस्ट. जब हम जोलॉजी का रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन सोच रहे हैं, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट सोच रहे हैं. हाँ, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सो वी आर थिंकिंग लाइक अ केमिस्ट. But when we are studying ecology, we're thinking like an ecologist. As simple as that. When I teach you, I think like you guys as well. I think like an examiner as well. I think like a teacher also. Now that's the trick. I've given too many tricks today. और follow करना, सुनना, सिर में पढ़ना, वो आपकी किस्मत. Okay. Now, status of a population simply means कि भाई ये population क्या grow कर रही है, नंबर में बढ़ रही है. जैसे हमारा देश है, इतने लोग हो जाएंगे कि संभालने मुश्किल. या जापान है,
जिसमें पॉपुलेशन कम हो रही है. One of the best things about them, they took measures at the right time. इसको ना थोड़े और अच्छे से समझते हैं. Right? Now people, this age diversity in human population कि कौन कितना परसेंट में है, I can use mathematics for this. And when I use a graph, graphs are great, aren't they? Pie charts and graphs are the best things about mathematics. Yeah? So when you use graphs, graphical representation of comparative abundance or the percentage of each age group makes it not only very tangible, but we get the result, we get to know the status of a population very accurately. करके देखते हैं. अब ये टेक्स्ट बुक में कोई करके नहीं दिखाएगा, शायद कोई कहीं ऐसे पढ़ाएगा भी नहीं. But here at Aakash BYJU'S, you have the privilege of seeing things happen. Ready? Now people, when I say graph, here I have taken males and females, both. So on x-axis, you have the percentage. And on the y-axis, as is in a graph, you have the age. Cool? With me? Eyes on the screen. Now what did I do? Acha, there is always young people at the base, pre-reproductive at the base, then comes reproductive and then comes the booda log. Cools? Now, pre-reproductive में अपन ने देखा कि population percentage दोनों male and female को मैंने add किया तो मेरे पास कुछ 28% इधर आ रही है और कुछ 20% उधर आ रही है. Cool? उसके बाद हमने क्या किया? We plotted the graph for the next age group. What is the next age group भाई? Y-axis पे ध्यान देंगे. What is the next age group? It is 15 to 40. मान के चलो. When individuals can give birth to more individuals, यानी कि they are going to add to the population. Very important age group. This age group for a country is very important, not in terms of only defining the status of the population, but also economically. Don't you think so? क्योंकि अपन 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, मान लो 21-22 में कॉलेज से निकल जाओगे, फिर करोगे नौकरी, और जब नौकरी करोगे, then the economy grows. How you do the नौकरी, what नौकरी you do, whatever. Till the retirement time. So people, the percentage when we calculate, it is coming approximately 20 and मोटा मोटा 18 से 20% कम है. यानी कि यंग लोग ज्यादा हैं. क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ने ये सोच लिया भाई बच्चे पैदा करने, वी लव टू हैव किड्स, तो ये लोग यहां पर एडिशन करते जा रहे हैं. सो द बेस इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर. यही रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन अगर डिसीजन ले ले कि नहीं यार देश के बारे में सोचो, फ्यूचर सोचो, वी आर नॉट गोइंग टू हैव किड्स, परहैप्स विल अडॉप्ट अनफॉर्चुनेट किड्स. ऐसा लोग सोचते नहीं है. दे शुड, आई सो विश दे शुड. ओके, तो कुछ हो सकता है ना. या फिर यू कैन ओनली हैव 1 किड, ऐसा कोई रूल गवर्नमेंट बनाए. एनीवे, यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, हाउ दिस ग्रुप बिकम्स इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये आया तीसरा ग्रुप. एक्चुअली यही वाले ग्रुप का फ्यूचर यहां है ना, बूढ़े तो होना ही है. अब इस एज ग्रुप में आपने परसेंटेज देखी, 10 से भी कम परसेंटेज रह गए, 5%. तो ये वो पॉपुलेशन है जिसमें बच्चे होते जा रहे हैं. एंड एज यू कैन सी विदाउट रटोफाइंग, दिस इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. क्योंकि भैया ये जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, आंखें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पर होनी चाहिए इस वक्त. And I tell you, you'll never forget it. ये जो यंग लोग हैं ना नीचे बेस पर, ये अगर ये ज्यादा हैं, when they reach the reproductive age, अपने आप ही ज्यादा बच्चे पैदा होंगे. Yeah, generally speaking. So what is an age pyramid? भाई अब you derive the definition. You walked and walked and walked, and now you reach at the definition. You don't do the reverse.
This is the definition. Now give me examples. Tell me, ma'am, what is the concept? I have no clue. So you walk from the concept to example to the definition. Are we good here? Make this change in every subject, I tell you. So the definition is graphical representation of the different age groups, or in other words, it is the pyramid which is obtained when you do what? When percent individuals of a given age or age group is plotted graphically. I say add this graphically. अच्छा, ecology में ना ऐसा नहीं होगा कि आपको एक definite definition मिलेगी, एक वही मतलब carved words मिलेंगे, पत्थर की लकीर है. Ecology is a very fluid science, I tell you. That's why I like it. You just flow. Once you understand the concept, go free, just flow and write your own definition. And I tell you, ये मैंने किया था boards में, अपने 12th boards में. The definitions which you will write in your own words will fetch you maximum marks. जो book की definition है, वो teacher answer key में लेकर बैठते हैं. अरे इसमें ये word missing है. Okay, half marks gone. This word is missing. Don't do that. Don't do that to yourself. I tell you, it's very easy. Children, it's very easy to score 100% everywhere. This is the era of 100%. हमारे time पे ऐसा नहीं था. Things were difficult. The competition was severe. That helps to some extent. Really, really helps. Competition is great, as you will study in evolution and ecology both. आया समझ में? सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करोगे तो मैं जवाब दूंगी, बाकी बातें बाद में करेंगे. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है नीट में? नीट की बात करते हैं. नीट की बात करते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ, क्या करेगा? डायग्राम देगा, चिल मारेगा. एग्जामिनर देगा डायग्राम और बोलेगा भाई ये कौन सी पॉपुलेशन है. What will you see in the diagram? He is not going to mention pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. क्या बोला मैंने? चिल मार रहा है वो. He is not going to mention this. So you see the shape of the pyramid. What is the shape of the pyramid? It's a triangular pyramid, which signifies a growing population as is seen in developing and underdeveloped countries. Underdeveloped countries में भी ऐसा होता है because of lack of education and awareness. India, भारत महान, we are expanding. अच्छा, हमारी स्थिति ये है कि इतना pre-reproductive individual है कि it will take 2 generations at least, if I think about it. 2 to 3 generations of pre-reproductive people to either not have many children or to not get married or whatever it is. अब ये बड़ा ना ethical और moral issues हो जाते हैं, cultural issues हो जाते हैं. India is a very rich culture, a lot of morals, lot of rich culture. We have amazing family values. As much as they work for us, I love the family values we have. यहाँ पर हम मार खा जाते हैं. हाँ, दादी को पोता चाहिए ही चाहिए. Okay, you understand? Now people, practical nations like US, they are a stable population. इसीलिए economy फिलहाल it has been great. फिलहाल, you never know. Now people, stable population. अच्छा, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. तो आप लोग बोल रहे हो ना इसमें से ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, ये आना ही आना है. उसके बाद हम एज पिरामिड सेकंड नंबर पर जाते हैं. अब आप क्या देख रहे हो? आईज ऑन द स्क्रीन, आईज ऑन द स्क्रीन. भाई ये जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप था ना, इसको आ गई अकल. इसने बोला यार 1 बच्चा इज इनफ. नाउ हियर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट द सेम. हम दो, हमारे दो में भी जो स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने, दैट ऑल्सो वर्क्स. ओके, सो नाउ इट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन बिकॉज 2 इंडिविजुअल्स विल रिप्लेस देम. और प्री पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम ही है. तो ऐसा जो पिरामिड है दैट सिग्निफाइज अ स्टेबल और नॉन ग्रोइंग पॉपुलेशन, नॉट नेगेटिव. Earlier we saw positive population. This is a non-growing or neutral population. आया? So what is the shape? अब वो क्या करेगा? वो एग्जाम में दे देगा. Identify the shape भाई and tell us what kind of population it is. So this is a bell-shaped pyramid, people. Looks like a bell, no?
आया? बेल शेप्ड पिरामिड सिग्निफाइज ला ला ला, वी आर गुड. कहां पे मिलता है? यूएस में मिलता है. Cool. And the other extreme is a declining population, people. भाई रिप्रोडक्टिव ग्रुप ने एक बच्चा क्या, दो बच्चा क्या, शादी नहीं की, बच्चा हुआ ही नहीं for generations together. Now what will happen? Young individuals are short. Less people. It might affect the economy to some extent, but it is worth taking the load of it. So reproductive individuals will ultimately turn into post-reproductive. यहां पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल से हैं. बेचारे ये सब बूढ़े होकर मर रहे हैं, ये सब बूढ़े होकर मर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कम कर रहे हैं. आया समझ में? सो दिस इज अ नॉन नेगेटिव पॉपुलेशन. इसकी हमें बड़ी जरूरत है देश को. आया समझ में? So that is seen in Japan, and they have taken good measures to do that. Okay, people. So these are the three age pyramids that you have. You have expanding population, you have stable, and you have declining population. Look at the shapes that you have. Did I tell you this will be urn-shaped pyramid? Yeah. What will be the shape of this pyramid? This will be urn-shaped pyramid. Urn समझते हो ना? It is narrow at both the ends. Urn का मतलब वो होता है यार, narrow at two ends and broad in the center. Urn समझते हो ना? Sort of a जैसे फ्लावर वास होता है, जिसमें if you've seen in the movies, we collect the ashes after death, that kind of urn. Okay, people. Now, coming to the aspect of population density. ये density क्या होता है? We always say metro cities like Bangalore, Delhi, Mumbai, they have a lot of population density. Population density simply means number of individuals of a species in a given time. Time का factor रहेगा. क्यों मैम? हर जगह टाइम क्यों घुसा देते हो आप? इन अ गिवन एरिया. ये एरिया क्यों घुसा देते हो आप? ए भाई, बोला ना मेट्रो सिटीज में ऐसा है. कंपेयर किया ना ज्योग्राफिकल एरिया. इफ यू गो टू अ विलेज इन हिमालयस एंड इफ यू कम डाउन टू दिल्ली, you compare, no? Population density. Because the area decides what happens to the population. The weather, the opportunities, the space for building houses and whatnot. So ecology is not as black and white as we think. It's a hue of colors. Okay? And time also matters. क्यों? Because मैंने क्या बताया? Constant change. मानस, थैंक यू बेटा. घड़ा, देखो जो घड़ा, वो जो पानी वाला घड़ा होता है ना, वो फिर नीचे से नैरो नहीं होता है. So that is not a urn. ये प्रॉब्लम है. आया? अब at any given point of time, कोई भी population कितनी भी superior, कितनी भी amazing है, it has to fight off these three major processes. It has to, there's a pressure. I call this the pressure on a population. Outcome of competition with another species. Wow. Now that is the emotion of ecology. भाई किसी भी वक्त पर आपका एक दिन नीट का एग्जाम होता है, अगर आप हमेशा ये सोच लो कि competition is something that is present every time, whether our mother is like, अरे my friend's daughter is doing better, she is attending Pankhuri Ma'am's classes every day, you're not attending, or it is at the level of lakhs of students on the exam day. Competition is persistent. So these are the constant or I'm going to say regular pressures on population. We are pressed by what is the outcome of competition. Are we winning?
सेकेंड, द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडिटर. अब नीट की प्रिपरेशन में प्रेडिटर क्या है? टीवी, bad company of friends who are actually dear to us, reading from too many books, Facebook, Instagram, all in one box. So all these things which are not going to be with you permanently. वो certificate नहीं रहेगा लेकिन डिग्री हमेशा साथ में रहेगी. थर्ड इज इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन. मुश्किल पेपर आ गया तो अगर कहीं पे प्लांट्स थे, कोई वीड ग्रो कर रही थी, भाई हम एक फील्ड में गए, वहां पे पार्थीनियम अपना मस्त ग्रो कर रही थी, कैरेट ग्रास, और वहां पे मैंने पेस्टिसाइड डाल दिया, क्या हुआ उस पॉपुलेशन को? क्या वो जिंदा रही या नहीं रही? तो ऑल दीज आर इवैल्यूएटेड व्हेन वी स्पीक अबाउट पॉपुलेशन साइज. I tell you, population size and population intensity are taken synonymously. एक ही एक बात है. Population intensity, density. चाय जब ना पी हो तो डेंसिटी की इंटेंसिटी हो जाती है. Okay, people? So population size is synonymous with density. यार, I can see the population density of these particular plants. ये सिर्फ human beings की बात नहीं हो रही है, अपने बारे में ही ना सोचें, सिर्फ ecology पढ़ें. The population density of this particular plant or the population size of this particular plant, what all we have to consider? Geographical. In Bangalore is more during the months of July to October as compared to the population size in Delhi. Now, as an ecologist, it becomes extremely important for you. अरे यार, बैंगलोर में इसको मस्त न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, the plant is happy, it's growing. दिल्ली में खुश नहीं है, बहुत pollution है. That way. That is why you need to study the attributes of a population. I'm going to be speaking more about the attributes of population in the next class, which will happen on Thursday. Today is Tuesday, right? It will happen on Thursday. Same place. Sometime. And I'll see you. Take care of your health. Keep smiling. And let me know if you have any concerns. Okay. Bye-bye.